Hello to all class 9 students and class 9 we are doing lesson number 6 partnership with commercial studies and we are going to finish this chapter today. So the topic for today is types of partners. Types of partners. So in the partnership there are different types of partners. So what are these partners? Who are these partners? What type of features of these partners are there and what type of privileges do these partners have? This is what we are going to discuss in today's class. So in the types of partners, you have first is your active or working partner. The first is your active or working partner. ठीक है, the first is your active or working partner. अब नाम से ही पता चल रहा है active partner किसमें क्या? Such a partner contributes capital and also take active part in the management. तो such partner contribute capital and takes active part in management. So this kind of partner, that is active or working partner, is the partner who has to contribute capital. Capital means money. Who has to give money to start the partnership, and moreover he can take part in the management. Whatever the management activities are going in the partnership, he can participate in those management activities. Second is your sleeping or dormant partner. Sleeping or dormant partner. Now, who is a sleeping or dormant partner? Name से ही पता चल रहा है कि sleeping partner है, active participate नहीं करेगा. So what is here? A sleeping or inactive partner simply contributes capital and does not take active participation in management. ठीक है? Simply contributes to capital but does not participate in management. Got it? So this kind of partner, what he is doing, he is contributing money in the business, in the firm, but he is not participating actively in the management. He shares the profit or losses of the firm. Whenever there will be profit in the firm or loss, he will share the profit and loss of the firm. His liability for the firm debt is unlimited. So again, his liability is unlimited. He will have a share in the profit. The only thing he is going to do is this, that he will not participate in the management. That's why we are calling him a dormant partner or a sleeping partner. You understand that? Sleeping partner कौन है? Simply ये पैसा लगाएगा business में और participate management में नहीं करेगा, लेकिन इसकी liability unlimited रहेगी और profit और loss में इसका हिस्सा रहेगा. Next is your secret partner. This type of partner contribute capital. Secret partner. ठीक है? Contribute capital. अब ये क्या है कि कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल. इस तरह का पार्टनर क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में एंड एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बिजनेस. ही शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस of the firm and his liabilities are limited. However, his connection with the firm is not known to outside world. He contribute capital, participation in management is there, share in profit and loss is there, but his connection to the firm, his connection to the firm is not known to outside world. This is very important. Now we are saying secret partner. When we are saying secret partner, it means that he is a partner in a firm, but the outside world is not aware of this thing that he is the partner in the firm. But other act features are the same. That means he is going to contribute capital, he is going to make share in the profit and losses, his liability is unlimited, he is going to take active participation in the management. But only thing there is that is different from other partners is this,
that his connection with the firm will not be known to the outside world, right? So this is your third type of partner. Next type of partner is your limited partner. The liability of such partner is limited. Fourth is your limited partner. The liability of such partner is limited. The liability of such partner is limited. इस तरह की पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी. ठीक है, नाम से पता चल रहा है लिमिटेड पार्टनर. सो यहाँ पे क्या होगा? The liability of such partner is going to be limited to the extent of share, capital expenditure and profit of the firm. He is not entitled to take active part in the management of the firm. The firm is dissolved in the event of his death, lunacy or bankruptcy. So liability partner, लिमिटेड पार्टनर वो होता है जिसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है. मतलब अगर फर्म को किसी को उधार लौटाने पड़ेंगे तो ये उस उधार के जिम्मेदार नहीं रहेगा. इसकी प्रॉपर्टी को बेच के आप फर्म का उधार नहीं लौटा सकते क्योंकि ही इज व्हाट लिमिटेड बाय liability. He is limited. His liability is limited, right? Second thing is this: he cannot take active participation in management. वो active participate management में नहीं कर सकता. अगर इस तरह का पार्टनर मर जाता है तो क्या होगा? फर्म को कोई असर नहीं पड़ेगा. So this partner is what known as limited partner. The next kind of partner is your partner in profits only. So this is next kind of partner. Partner in profit only means he shares in the profit of the firm, but not in the losses. Share the profit only. Profit, but not losses. So such kind of partner has share in profit only, but he has no share in the profit. अगर firm को loss हो जाता है तो इस तरह का partner क्या करेगा? Losses में share नहीं करता है. ठीक है? His liability for the firm debts is unlimited, but he does not take part in the management. Liability is going to be unlimited. Liability is unlimited. And there is no participation in the management. Sixth and the last kind of partner is your nominal or ostensible partner. After that you have more minor partner is also important. Nominal partner. Nominal partner कौन होता है? Now we are reading what? Nominal partner. Nominal partner कौन होता है? Such a partner either contributes capital, not take such a partner neither contributes capital, not take part in the management of the business. He does not share the profit or losses of the firm. He only lends his name. Only lends name. No share in profit, no share in loss, no liability, no management look after. He will not even look after the management. He will only lend his name. Now why such partner is lending his name? For the reputation of the firm. ठीक है, अगर कोई बड़ा आदमी आपकी फर्म का पार्टनर बन जाता है तो उससे क्या होती है? आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया और आपका अमिताभ बच्चन जी आपकी फर्म के पार्टनर बन जाते हैं तो सब लोग क्या बोलेंगे? वाओ, इनकी फर्म का पार्टनर तो अमिताभ बच्चन है, तो बहुत अच्छी फर्म होगी. ठीक है, पर अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया? ना तो पैसे लगाया आपकी पार्टनरशिप में, ना वो लॉस में हिस्सेदारी लेंगे, ना ही वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेंगे, ना ही वो मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लेंगे. उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया आपकी पार्टनरशिप में, आप एक मेंबर बन गए हैं. क्यों? ताकि आपकी फर्म का क्या हो? खूब नाम हो जाए. आपकी फर्म में लोग बोले कि यार इतने इतने बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, मतलब आपकी फर्म की रेपुटेशन बढ़ जाए. तो ये नॉमिनल पार्टनर होता है, सिर्फ अपना नाम देते हैं अपनी पार्टनरशिप को. सेवंथ इज योर माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर कौन होते हैं? लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स. जो लोग 18 ईयर्स से छोटे होते हैं वो भी पार्टनर्स बन सकते हैं. ठीक है, तो पीपल लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स माइनर पार्टनर कहलाता है. ठीक है, और ओनली बीइंग सो एडमिटेड माइनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट. और वो अगर जैसे पार्टनर बनता है वो शेयर प्रॉफिट में शेयर उसको मिलता है, लेकिन वो मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं ले सकता, वो अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता और वो उसको कोई सीक्रेट्स नहीं बताए जाएंगे. उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी. बट उसे क्या मिलेगा? ओनली शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा. ओनली शेयर इन प्रॉफिट. इस तरह का पार्टनर जब 18 साल से बड़ा हो जाता है, when he grows up and crosses the age of 18 years, he is converted into normal partner.
ठीक है। तो इस तरह के पार्टनर को 6 महीने के अंदर बताना, एक लेटर लिखना पड़ता है और बताना पड़ता है, नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि या आई हैव क्रॉस माय 18 years of age and now I am an adult, so I am no more a minor partner. So such kind of partner is known as what? Is known as a minor partner. So these are some kinds of partners, and these are active partners or working partners, sleeping or dormant partner, secret partner, limited partner, partner in profit only, nominal partner and minor partner. So these are some kinds of partnership. Minor partnership के बारे में और भी लिखा गया है, ये बोलते हैं what written in your book is a minor is one who has not completed 18 years of age. A minor cannot become a partner because he is not qualified to enter into a contract. एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 18 साल से छोटा है, बट he may be admitted to the benefit of partnership with a mutual consent. लेकिन अगर बाकी के पार्टनर्स मिल के बोलते हैं कि नहीं ये 18 साल से छोटा तो है लेकिन वी कैन गो मेक हिम अ पार्टनर, तो सबकी अगर कंसेंट मिल जाती है, मर्जी मिल जाती है, तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है. ऑन बीइंग सो एडमिटेड अ माइनर पार्टनर्स बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट. जब सब उसको बोलते हैं कि हाँ इसको हाँ पार्टनर बना सकते हैं, 18 साल से छोटा है, तो जब सबकी हामी बढ़ जाती है, उसे पार्टनर बना दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे को या ऐसे पार्टनर को क्या मिलना शुरू हो जाता है? प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है. उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी. व्हेन आई से दैट द लायबिलिटी इज गोइंग टू बी लिमिटेड, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट ही इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द फर्म्स डेब्ट्स. वो फर्म के उधारों के लिए रिस्पांसिबल नहीं है, ठीक है. जैसे अब वो जब 18 साल से बड़ा हो जाता है, मतलब जो मेजर बन जाता है, आफ्टर बिकमिंग अ मेजर द माइनर मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस विद इन 6 months. जब वो बड़ा बन जाता है, 18 साल से ऊपर चले जाता है, माइनर का उल्टा होता है मेजर. जो बच्चे 18 साल से छोटे होते हैं वी कॉल them minor, and children those who cross 18 years of age are called major. So when he becomes major, within 6 months of his age, crossing his minor age, within 6 months he has to give a notice and he has to mention that I have crossed my age of an minor and now I am an adult or I am a major. So I am just notifying you these things, I am just telling you these things, and he can continue or he can withdraw his partnership from that particular firm. So these are what different kinds of partner, and I hope the chapter is clear to you. And here we are finished with the chapter, right? And soon I'll be sending you the notes of this chapter also. I hope the chapter is clear to you, and I'll see you soon in the next chapter. Now we'll start with economic applications. Till then, children, keep completing your work as well.